ओम शांति अव्यक्ति परिवार में Om Shanti, स्वागत है। bienvenue à Vyakti Parivar. 19 Aujourd'hui, रहम c'est le दिल 19 दाता बनो octobre. मुक्त बनो मुक्ति का दान दो Le donneur miséricordieux, devenez libre et devenez maître d'honneur. रहम दिल दाता बन मुक्त बनो मुक्ति का दान Le दो donneur miséricordieux, प्रकृति विजय का हाथ devenez पकड़ो libre et devenez अपनी maître d'honneur. आत्माओं का La आह्वान करती nature है détient la guirlande समय de la विजय का victoire घंटा et vous बजने के invoque, लिए vous qui êtes les आखिरी maîtres de la nature. स्वराज्याधिकारी Le आत्माओं temps को détient la सुनाइए cloche de la victoire et vous भक्तात्मा regarde, हृदय ने याद कर vous qui रही है deviendrez les कि futurs rois. हमारी पूज्य Les देवता âmes des आज dévots हमारे se चित्त souviennent du से jour où les déités हमें dignes d'être मुक्ति का adorées वरदान देंगी seront satisfaites दुखी d'elles- आत्माएं पुकार रही हैं कि elles-mêmes. कब दुख Elles हरने leur की स्वागतता donneront आज्ञाएं la पहुंचे bénédiction de la libération. तो हे Les âmes malheureuses विश्व implorent कल्याणकारी et आत्माएं attendent le moment où अपनी les âmes दुखी qui effacent अवस्थाओं la को peine समाप्त et करो donnent le अगर bonheur मुक्त हो seront जाओ révélées. तो सर्व आत्माएं Maintenant, प्रकृति mettez fin à मुक्त leur हो attente. जाए तो मुक्त बनो Libérez-vous, et मुक्ति का alors दान toutes देने les के âmes, लिए la nature et मास्टर les देवता dévots बनो seront libérés. मोहिनी दीदी सिस्टर Devenez libres et devenez des maîtres d'honneur qui font le don de la libération. Maintenant, voici Moini Didi. Voici Moini. ओम शांति। Om Shanti. हम कहते हैं अव्यक्त इशारे Disons क्योंकि अब हम लोगों को अव्यक्त बनना है que ce sont des signaux aviactes तो parce इशारे que nous devons devenir des anges उसी प्रकार aviacts. के होते हैं तो Les हमारे इशारे signaux que nous devons invoquer प्रकृति sont aussi semblables à ça. On doit s'en imprégner. Même la nature हार लेकर attend. के Elle attend la प्रकृति guirlande de la विजयी victoire. आत्माओं Elle का attend. आवाहन कर रही है Elle invoque तो हम les, सबको les maîtres de la प्रकृति की दो nature. बातें Donc, हैं nous tous, एक स्वभाव il और y a दूसरा deux संस्कार aspects. Un, c'est notre दोनों को propre प्रकृति nature कहते हैं et aussi les 5 éléments. Les deux तो sont स्वभाव appelés la nature. कई तरह के जो संस्कार होते हैं Swabham, c'est la nature intérieure. Il y वो a स्वभावतः un चेंज certain नहीं nombre de होते sanskars qui émergent क्योंकि फिर वो संस्कार बन जाते हैं ना अब हम यूज कर रहे हैं संस्कार को तो वो et संस्कार les sanskars ne कहीं doivent और pas शिफ्ट हो जाता है जैसे toucher अगर हम ध्यान में ma nature. व्यापक कर रहे Et हैं si le sanskar va तो atteindre ma संस्कार की nature, si le विजय sanskar का atteint ma घंटा nature, il va devenir un danskar. Et cela ne doit pas समय arriver. विजय का Et घंटा Baba dit, अब donnez du temps. राज Il y a le अधिकारी temps. Le temps आत्माओं को देख रहा है tient la cloche de la victoire et vous regarde, हम तैयार vous qui हैं deviendrez les futurs rois. हमारी स्थिति अव्यक्त है Sommes-nous prêts ou सब pas? एक रस है अचल है Notre niveau est-il aviaque? Est-il constant, तो ये inébranlable, immuable? विजयी समय का घंटा जैसे कि हमारी उस Ce sont les स्थिति का cloches du आवाहन temps. कर रहा है और जो भगत Et आत्माएं हैं elles invoquent notre niveau.
Et les âmes des dévots se souviennent de ces moments quand les déités dignes d'être adorées seront satisfaites et donneront la bénédiction de la libération. Quand c'est notre forme digne d'adoration, et on se libère quand on est dans le monde des âmes, mais toutes les habitudes ou les sanskars, nous devons être libérés aussi de cela. Les habitudes et les sanskars. On dit aujourd'hui, je suis libre, mes liens d'attachement ont été libérés. Et Baba dit, les âmes qui sont malheureuses implorent et elles attendent quand les âmes qui sont les âmes qui enlèvent la peine et qui donnent le bonheur seront révélées. Maintenant, Baba dit, oh, les âmes miséricordieuses, les âmes qui libèrent le monde, libérez-vous, et ainsi toutes les âmes et les autres aussi seront libérés. Soyez libérés, libérez-vous, et ainsi toutes les âmes, la nature, les dévots seront aussi libérés. Devenez libres et devenez des maîtres d'honneur qui font le don de la libération. Quand on se lève pour la Vela, nous devons commencer à partir de ce moment-là. Et c'est à ce moment-là, quand il n'y a rien d'autre dans l'intellect et quand on devient un karma yogi, bien sûr, il y a de l'attention, mais demain, nous allons porter attention à toute pensée qui s'élève. À quelle vitesse est-ce que je peux me libérer de ces pensées? À quelle vitesse je peux me libérer du passé et aller de l'avant? Donc, nous devons devenir libres de ces attaches si on veut atteindre un haut niveau, si on veut aller au-delà. Donc, c'est très important, dit Moïni, de se libérer soi-même ici sur la Terre. Au moment de l'âge de confluence, Baba veut que nous expérimentions la libération dans la vie. C'est notre première naissance. Donc, ne jamais avoir la pensée ou penser que nous sommes soumis. On devient malheureux quand on est soumis. Donc, il y a une influence de la tristesse sur nous. Donc, quand on veut, on doit d'abord porter attention et on doit réviser et se rappeler les uns les autres. On doit utiliser différentes méthodes et au jour le jour, on devient très occupé au niveau de l'esprit et de l'intellect, mais on doit continuer nos efforts pour aller de l'avant. Et c'est pour cela que Baba nous donne ces signaux aviaques. Et c'est pour nous, les enfants, ces signaux aviaques viennent de Madhivan. Et on doit penser que nous sommes des âmes et que on est les maîtres de la nature. Même la nature, Baba dit, et même la nature deviendra libre des calamités. Il ne doit y avoir que le bonheur. Quand la nature, qu'est-ce qui se passe après la libération? Il y aura le bonheur. Tant et aussi longtemps que nous sommes dans les liens, il y a un type ou l'autre de peine. Parfois, c'est de la peine qui vient des autres âmes ou encore de nos sanskars. Quand il y a des liens, il y a de la peine. Donc, nous, demain matin, nous devons faire nos devoirs avec beaucoup d'attention
Je dois devenir maître libérateur. Om Shanti. रहम दिल दातापन मुक्त बनो मुक्ति का दान दो Le donneur miséricordieux, प्रकृति devenez विधाता libre et काल devenez अपनी maître धरती d'honneur. आत्मा La का nature आह्वान करती détient la है guirlande de la victoire समय et vous विश्राम invoque, vous qui êtes les शांति maîtres de la आप nature. भविष्य Le राज्य temps détient la बनाए cloche de la आत्माओं victoire et का vous regarde, पालनहार vous qui deviendrez les rois, les futurs rois. भक्त आत्माएं वह दिन Les याद âmes des करती dévots se हैं souviennent du जो jour हमारी où les पूज्य déités आत्माएं dignes d'être हम adorées पर seront प्रसन्न हों satisfaites हमें d'elles-mêmes मुक्ति का et leur वरदान donneront देंगी la दुष्ट bénédiction de la आत्माएं libération. पुकार रही है Les âmes malheureuses मुक्ति implorent करता et attendent le सुखकर्ता moment où les आत्माएं âmes qui effacent la प्रत्यक्ष peine होंगी et donnent तो हे le bonheur seront révélées. विश्रांतिकारी आत्माएं Maintenant, अब इन्हों के mettez इंतजार fin में à leur समाप्त attente. करो Libérez-vous. आप Et मुक्त हो alors, जाओ toutes les âmes, la सच nature et आत्माएं les dévots प्रकृति भक्त seront मुक्त हो जाए libérés. Devenez तो मुक्त libres बनो et मुक्ति का devenez des दान देने maîtres वाले d'honneur qui मास्टर font le दाता don बनो de la ओम libération. शांति Om Shanti.